हेलो एवरीवन, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम द डिजिटल डायरेक्शन। और आज हम बात करेंगे टिकटॉक ऐप इंस्टॉल कैंपेन या टिकटॉक ऐड प्रमोशन कैंपेन्स। सो बेसिकली टिकटॉक ऐप प्रमोशन कैंपेन या ऐप इंस्टॉल कैंपेन सिमिलरली जिस तरह आप फेसबुक पे, गूगल पे और स्नैपचैट पे ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाते हैं, टिकटॉक में भी सेम इसी तरह ही चलाते हैं, बट देर आर फ्यू डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल because TikTok is most famous platform on Gen Z and especially वीडियो प्लेटफॉर्म है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि ये कैंपेन हम कैसे चलाते हैं. लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन. बिफोर आई स्टार्ट देर आर 6 स्टेप्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टिकटॉक पे अपना एड अकाउंट या एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे. देन नंबर 2, यू विल क्रिएट a pixel for TikTok for your app. Number 3, you will create a campaign. 4, you will set up a ad group. Number 5, you will create the ad or you will add the creative into the ad. And last but not least, you will measure the performance of your campaign. So let's start from my ad manager account. So let's go to ad manager, TikTok ad manager. I just click on the TikTok ad manager. सो वंस यू विल लॉग इन टू योर एड मैनेजर अकाउंट, तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी. सो फर्स्ट यू विल गो टू एसेट्स. इन एसेट्स यू विल गो टू द इवेंट्स. बिफोर स्टार्टिंग द कैंपेन यू नीड टू सेटअप द ऐप इवेंट्स सो दैट आप अपनी कैंपेन की ट्रैफिक को और अपनी ऐप की ट्रैफिक को जो है वो मेजर कर सकें. सो नंबर 1, आप मैनेज इवेंट्स में जाएंगे. इन मैनेज इवेंट्स you will have 2 options here. One is for iOS and other one is for Android. So आपके सामने दोनों यहाँ पे मेरी apps नज़र आ रही हैं. You can connect with your apps directly or otherwise I will create a separate video how to connect your app with the apps with the TikTok ad manager event. तो यहाँ पे आप अपनी दोनों apps को connect करेंगे which is already connected here. फिर इसके बाद हम campaign में आते हैं और campaign से we will start a campaign. So let's create a new campaign here. Once you will click on the new campaign, you have 2 options again here. One is simplified mode and the other one is custom mode. In simplified mode, if you want to do a little bit more automatic targeting or less control, then you will go for simplified, but I would suggest कि आप customized mode में जाएं ताकि आप अपनी मर्जी से targeting और campaign की setup कर सकें. तो let's try this one. Once you click on the campaign, you have all the campaign options available. Different objective has different campaign. So we are going for app promotion campaign. So let me click here. App promotion campaign में आपके पास further 2 option है, app install and app retargeting, or then you have also smart performance campaign. So we'll go for app install automatically. Then आपके पास यहाँ पे iOS dedicated campaign की option भी है, which we are not doing. We are running a campaign for Android. So let's not go into that one. कैंपेन का नेम सेलेक्ट करेंगे. just put sorry so campaign name is test Android. Okay, then the rest of the setting will be remain same. And we will continue. Now we are in ad group level. हम ad group level पे अपने ad group का नाम रखेंगे. For example मेरी ये ऐप फाइनेंशियल ऐप है तो मैं इसका फिनटेक एड ग्रुप का नाम रखा है, फिनटेक ऐप. यहाँ पे हम अपनी ऐप सेलेक्ट करेंगे. सो दिस कैंपेन इज़ फॉर एंड्रॉयड, सो विल सेलेक्ट माय एंड्रॉयड ऐप. देन यू हैव प्लेसमेंट ऑप्शन. इन प्लेसमेंट यू हैव ऑटोमेटिक और सिलेक्टेड. अगर मैं ऑटोमेटिक करूँगा तो टिकटॉक के जितने भी प्लेटफॉर्म है या जितने भी पार्टनर हैं यहाँ सब पे इसको ऐड नज़र आएगा. तो इट्स बेटर कि वी विल गो फॉर सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म. इन सिलेक्टेड आई वॉन्ट टू रन एड ओनली ऑन टिकटॉक, तो मैं बाकियों को अनचेक कर दूंगा. देन यू हैव एडवांस सेटिंग्स. एडवांस सेटिंग में आपके पास वीडियो व्यूज़, डाउनलोड्स, शेयरिंग, कंटेंट, इन ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए. मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ऐप जो है जब कोई इंस्टॉल करे तो वो कमेंट भी करे, डाउनलोड भी करे और मेरी वीडियो को शेयर भी करे. तो ये सारी चीज़ें विल बी देयर. क्रिएटिव टाइप, आप ऑटोमेटिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं. एंड देन यू हैव कस्टम टारगेटिंग. सो यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं क्रिएटिव टारगेटिंग नहीं कर रहा बिकॉज आई वांट कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना क्रिएटिव सेट करूँ और अपनी मर्ज़ी से हेडलाइन टैग्स और सारी चीज़ें ऐड करूँ. तो आई एम नॉट गोइंग फॉर ऑटोमेटिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है जी. देन वी विल गो फॉर कस्टम टारगेटिंग. कस्टम टारगेटिंग में आई कैन सेलेक्ट द ज्योग्राफी
In geography I have further language. In language I will go for English only, या मैं ऑल लैंग्वेज लेता हूँ ताकि मेरा ऐड मैक्सिमम लोगों को नज़र आए. उसके बाद मेरे पास ऑडियंस की ऑप्शन है. देन आई कैन सेलेक्ट द ऑडियंस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर. टिकटॉक ऑटोमेटिकली मुझे 5 किस्म की ऑडियंस यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है. पेमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, ऐप, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, bookkeeping, so which is all relevant to me. If I want I can add more. For example, I want to add any other, so I can add that. Otherwise I'll go for and apply for this one. ठीक है जी. I can search for financial. Okay, financial literacy is my one of the requirements, so I have selected financial literacy. So similarly I can add more. Interest based or similar interest, I can add more targeting. Behavior I can add hashtags. There are so many options. For example, I want to add hashtag fintech. I can add so many things, so I'm not going to change this one. Then I have device targeting, which I don't want to do. Then I have a daily budget option. Minimum budget is 20, so I'll go for $20. Then I have option of date, starting date or end date, so scheduling. So I want to run the ad what time, then day specific. I will go for specific time. Why? Because TikTok में usually लोग जो है लेट नाइट ज़्यादा TikTok यूज़ करते हैं या लेट इवनिंग में. तो आई एम नॉट गोइंग टू रन द एड इन मॉर्निंग टाइम. आई विल स्टार्ट फ्रॉम like 4-5 o'clock onward till 2 a.m. So this is my audience viewership time. Then I have optimization goal. Right now I'm running first campaign, so I will go for install. If I have more audience, so I can go for an in-app event, specific event I can create in my app, and I can show the ads to them. And then I can go for click campaign. I can also go for in-app event campaign. Install and in-app event means somebody will click on my app and install, they will go to specific page or specific event of my app. So right now is install only. So then we'll go for cost, lowest cost, bidding, CPM. These are basic things, so let's not touch this one, and we'll move forward. Now the next step is add. Now the next step is add creative, so we'll add the new creatives here. So मैं सैम्पल एक फोकस वन थिंग के नाम से मेरी एक वीडियो विच आई एम गोइंग टू ऐड एज अ टेस्ट क्रिएटिव, and then I'm going to add the creative here. So the option is to add creative from here. So let's add the creative from, or let me try some other creative as well. So this is the another creative which is less than 1 minute, so I have selected that, and then I will go and move next step. So now I need to add the text or heading for the creative. So I would say focus one thing. So the AI will give me also suggestions what type of copy I can use. So for example, I'll choose that one, and then I can, the rest of the tracking is already set up through the apps flyer, which I will discuss with you in the next video. So I will go for call to action. I can go for a standard call to action. I want download, so I will go for download, and I can change that accordingly as well, shop now or sign up or something, but I want downloads. So this is how it is ready, and yeah, then I will submit this campaign, and let's see if it approves. Yes, now we are ready to run this campaign, and this is ready to start. So after you run this campaign, then you have to go to your dashboard and check the campaign numbers, and after that you can optimize it and you can improve your campaign performance. So for that you need to go to the
dashboard on your left side. In dashboard you will see all the numbers on top, how many campaigns are active, what is the total amount you are spending, for which date to which date you can check that, how many disapproved, out of budget. Then you can select cost, impression, clicks, conversion. You can also change the conversion to CPM, conversion SKN network, CPA, SKN, clicks. You have option as well here, different options here, and you can see that. Moreover, in dashboard you can see the campaign, different type of campaigns and their results, and the audience who is interacting with your campaign. Moreover, you can also see which platform is performing better. If you are running campaign on TikTok or other platform, which platform is doing good. Similarly, iOS, Android, iPad, and the day part as well. I hope it's very easy to set up an app install campaign on TikTok. If you have any question, you can comment below, and I will see you in the next one.